Grammar, we have to answer any one of the following questions that is within 120 words. You want to apply for a job in the editorial department of a newspaper. In response to an advertisement, write your curriculum vitae and add a covering letter. Anyone from this four. So we have to choose any one topic and write a short composition maximum of 120 words in the correct format. Simple English. uh, Job application CV plus covering letter. We saw a newspaper advertisement for a job in the editorial department, so we must write a curriculum vitae, that is CV, and a covering letter asking for the job. So basic points is that we have to mention our name, education and skills. We have to write a polite and a formal letter because it is not written to our friends, it is written to any job opportunities, job works, right? So it will be a formal letter. Keep it short and neat. And so covering letter is that to the editor XYZ newspaper, or any name of the newspaper if it is mentioned in above in the question. So madam, or respected sir or madam, I wish to apply for the post in the editorial department as advertised. I am a graduate with good command over English and keen interest in editing and reporting. So if you want to join any job, then you should get interest on that particular job, and it will be more interesting for you to do that job. So it is very important that you should mention it, you have an interest in editing and reporting over here as per advertised. Okay. I am hardworking and sincere. This is not enough confidence over here because you are showing your ability of how you work. Kindly consider my application. Yours faithfully, your name. And again, curriculum, in a curriculum vitae, your name, qualification, skills and experience also. As you if you have done any work in work before in editoring, journalism type reporting, then you can mention that, otherwise you are a fresher. Report on earthquake. Report on earthquake. On February 25, 2025, you were taking a morning walk when an earthquake struck. Write a report on your experience. So, we experienced an earthquake while walking in the morning. Write a report describing of what happened. So, basic points in the report is date and time, what you saw and felt, damage and the people's reaction, calm ending. Okay, so answer is that on February 2025, or on February 25, 2025, while I was walking on a morning walk, while I was on a morning walk. So यहाँ पे क्या कहा था कि मैं morning walk कर रही थी तब एक earthquake struck हुआ. ठीक है, so we have to mention that. On February 25, 2025, while I was on a morning walk, the ground suddenly started shaking. People panicked and ran out of their houses. Electric poles shook and some buildings developed cracks. Fortunately, no major loss of life occurred. Rescue teams arrived quickly and helped the injured. The incident taught us the importance of safety and calmness during natural disasters. So, अब कोई भी जब वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी तो क्या कर रहा था या कर रही थी तो क्या हुआ कि ग्राउंड सडनली शेक करना शुरू हुआ, यानी कि अर्थक्वेक आ गए. तो पीपल पैनिक्ड हुए और पैनिक्ड होने के बाद पीपल क्या करने लगे, अपने घर की तरफ भागने लगे, भागा दौड़ी मच गई. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोल्स जो थे वो भी गिरने लगे एंड जो बिल्डिंग्स जो थे, मतलब गिरने लगे नहीं, इलेक्ट्रिक पोल्स भी हिलने लगे एंड जो बिल्डिंग्स थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, उनमें थोड़े क्रैक्स आ गए. बिल्डिंग्स गिरे तो नहीं बट क्रैक्स आ गए, क्योंकि बिल्डिंग गिरा तो अब बहुत एक मेजर प्रॉब्लम बन जाएगा वो. यू हैव टू मेंशन मोर लॉट ऑफ थिंग्स एंड 120 वर्ड में ये फिनिश नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो बिल्डिंग सिर्फ क्रैक्ड हुए. फॉर्चुनेटली लाइफ का उतना लॉस तो नहीं हुआ, फिर भी रेस्क्यू टीम्स आके बहुत जल्दी रेस्क्यू टीम आ गई और जो भी इंजर्ड थे, मरे तो कोई भी नहीं पर जो भी इंजर्ड हुए थे उनकी रेस्क्यू टीम ने मदद कर ली. ठीक है, एंड जो इंसिडेंट था, अब ये इंसिडेंट हमें ये सिखा रहा था कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर तो होते रहते हैं. सो इन नेचुरल डिजास्टर में हमें सेफ्टी एंड धैर्य बना के रखना है. सो वी हैव टू एंड इट इन अ काम नोट. ओके, a complaint, write a complaint letter to bank manager.
meaning you are unhappy with poor service in a government bank and want to complain formally. So basic point is that it should be written in a formal format of letter, right? Clear complaint no that matlab not a lengthy type, okay, it should be clear. Polite request also for improvement. So to the branch manager, ABC Bank. Sir or respected sir, I wish to complain about the poor service in your bank. The staff is unhelpful and there is long delay in work. Customers have complained. Customers have to wait for hours. Kindly look into the matter and improve the service. Yours faithfully, XYZ, your name over here. So, into a branch manager of ABC Bank, you are writing a letter. सो यू विल राइट दैट कि मैं किसी को कंप्लेन कर रही हूँ, मतलब आपके बैंक के जो पुअर, आपके बैंक में जो पुअर सर्विस मुझे मिल रही है उसके बारे में मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ. तो जो स्टाफ है वहाँ पे वो अनहेल्पफुल है, वो किसी की मदद नहीं करते और जो काम है वहाँ पे जो काम होता है उसमें भी बहुत देरी हो जाती है. सो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा घंटों घंटों वेट करना पड़ता है कस्टमर्स को. सो आप इस मैटर को थोड़ा देखिए और इसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश करें, बोल के उसने लिखा हुआ है. Letter to father for school excursion. You want a permission from your father to go on a school trip. Okay, so we have to write a letter to our father. So it will be an informal letter because that is written to our father for a trip, right? Basic points is that it should be written in an informal letter format. It should be a polite request because you cannot order your father, right? Assurance of safety. So you will give an assurance of safety because you are going out of the school, out of the village or out of the town maybe, right? So dear father, I hope you are well. Our school is organizing an excursion next week. All teachers will accompany us and proper safety will be maintained. It will be educational and enjoyable. Kindly give me permission to join the trip. Yours lovingly, your son or your daughter. Okay, you can write your name also, but your son and your daughter is perfect. So फर्स्ट आई होप यू आर वेल, ये चीज़ लिखना तो नहीं चाहिए लेटर में क्योंकि जो काम है उस चीज़ को पहले हम मेंशन करेंगे. हमारा स्कूल क्या कर रहा है, एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है नेक्स्ट वीक. सो सारे टीचर्स उस चीज़ को अकम्पनाइंग करेंगे एंड प्रॉपर सेफ्टी भी मेंटेन होगी. यहाँ पे ये एक एजुकेशनल पर्पज़ में हो रहा है बट फिर भी इंजॉय भी करेंगे हम इसमें. तो मुझे प्लीज़ परमिशन दीजिए कि मैं इस ट्रिप को ज्वाइन कर सकूँ. अब ये प्लीज़ परमिशन दीजिए कि इस ट्रिप को ज्वाइन कर सकूँ. इससे पहले पूछना है कि आप कैसे हो, मुझे आशा है कि आप अच्छे हो. मतलब ये आप अब वो कब आएगा, आई होप यू आर वेल, दिस इज़ फाइन, बट आप कैसे हो एंड ऑल आप पूछने लगोगे तो वो लेटर 7 दिन बाद आएगा, 8 दिन बाद आएगा, तो वो वैल्यू नहीं रहेगा इन्फॉर्मल लेटर में भी उस चीज़ का.